ओम शांति। ओके। अभी सब साइलेंस में स्थिर होकर बैठो। कानों द्वारा सुनना है और हमको मुख द्वारा बोलना है, पर रहना साइलेंस में है। ये जो हमारा 30 साल हो गया अभी, थर्ड संडे के जो बाबा ने नियम बना के दिया था, 1 घंटा विश्व सेवार्थ, हमको वो घड़ी वो दिन याद है। वो भाई हमारा हाजिर नहीं है जिसने बाबा से ये प्रेरणा ली, विश्व सेवार्थ क्या करे। तो मधुबन से मीठे बाबा के प्रेरणा अनुसार ये जो नियम बना के बाबा ने दिया है, मैं हाथ नहीं उठाती हूँ, परंतु बहुत मैं समझती हूँ थोड़े होंगे जिन्होंने कभी मिस नहीं किया होगा। हाथ नहीं उठवाती हूँ, पर मैं अपने दिल से कहेंगी कभी मिस नहीं किया है, किसी कारण से मिस नहीं किया हुआ है। क्योंकि विश्व सेवा अर्थ संगठन में बैठ, बाकी भी मेरे ख्याल में 11-12 साल हो गया। जो एक ही टाइम 6:30 से 7:30 सारे विश्व भर में मेडिटेशन चलता है। कितनी अच्छी सेवा संगठन में बैठ विश्व को शांति मिले, ऑटोमेटिक मिलेंगी। बाबा ने ब्रिज कोठी में भी कहा था, कराची में भी कहता था, बच्चे ये जो तुम साइलेंस में बैठते हो ना, कईयों को ये साक्षात्कार होगा, ये संगठन का कॉमन बात, सहज बात नहीं है। प्रेयर में आवाज है, ये आवाज से परे सब एकदम एकाग्रता की शक्ति से मीठे बाबा के, सर्वशक्तिमान बाबा के याद में कोई बात की हलचल नहीं, बुद्धि किसकी हिलती नहीं। अब अंदाजा लगाओ, कहाँ एकदम जोर से बरसात पड़ती है, जब गर्म वायुमंडल है तो कितना भगवान को सब, अरे मेरे में भगवान कैसे बरसात बरसाई। तो ये जो जैसे बड़ा कहीं अंदर कहीं जगह ये वायुमंडल जैसे ठंडी ठंडी, हाँ, बरसात कई स्थानों पर पड़ती है। ये अनुभव कईयों के अभी सुनने को मिलेंगे, पर जिन इस प्रकार की इतनी एकाग्रता की शक्ति से जब बाबा हमको याद में बिठाता था,
अभी तो गीत बजते ही हलचल शुरू हो गई, हिलना शुरू हो गया, उठना शुरू हो गया, कांध हिलना शुरू हो गया। जैसे ठहरे हुए थे, गीत पूरा आज बजे तो हम उठे। हम जब बाबा के सामने बैठते थे, बड़े कितना टाइम बैठे रहे। जी कहता है बाबा आपके संग, इतने बड़े संगठन में जो अकेलाई में बैठे इतना याद में नहीं रह सकते, जितना संगठन का मदद, संगठन और स्थान। वायुमंडल बना हुआ है ना, इस हाल में आएंगे, क्यों आएंगे? या मुरली सुनने, क्लास करने और साइलेंस में बैठने के लिए। मैं भी आजकल मेडिटेशन कर कम यूज़ करेंगी, फिर उसका अर्थ समझाना पड़ता है। जो भिन्न भिन्न प्रकार से मेडिटेशन करते हैं ना, फिर साइलेंस में बैठेंगे। साइलेंस में रहना मानना ही है। रहेंगे अंतर्मुखी जो होंगे ना, वो साइलेंस पसंद करेंगे। आवाज़ में नाम मात्र, निमित्त मात्र आएंगे, साइलेंस से कई काम करेंगे। जो आजकल बाबा की प्रेरणा है ना, हम बच्चों को किस तरह से सेवाधारी बना रहा है। बहुत सालों से सेवाएं, कभी अच्छा सेवा में पार्ट बजाया है, पर आज जो मुरली सुनी है, दिमाग के सुनई और दिल के सुनाई में, गुलजार दादी और हमने रिपीट किया मुरली नीचे भरा प्यार से। मैंने कहा कहाँ से बाबा कैसे बोल उच्चारण करते, हाल तो दिमाग खुल जाए, दिमाग से समझाए मैं कौन हूँ, बाबा कौन है। पर दिल से मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जो बाबा से मिला है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। प्यार बच्चे की तरह से नहीं मिल रहा है। बच्चे को बाबा बच्चे को प्यार करता है। बच्चा जो नया नया बाबा का बच्चा है, तो वो बाबा प्यार करेंगे, बहुत प्यार करता है। जो प्यार किसी ने नहीं किया ना, वो बाबा करता है। भगवान को याद करना तो अच्छा है, पर भगवान का प्यार पाना वंडर है, उसका प्यार। तो हम याद करते हैं, फौरन प्यार मिलता है तो याद आती है। ऐसे नहीं याद करना पड़े, प्यार मिला तो याद आती है। किसको अनुभव है, प्यार मिला है तो याद आई है बाबा की, और किसकी याद आती नहीं है। जो आज बाबा ने कहा लीकेज कोई है, किसी न किसी तरफ कहाँ भी जरा सा अंगूठा भी लकीर से बाहर निकल गया, सोना हरण देख थोड़ा सा साधनों की तरफ भी ध्यान गया ना। इसे कई अच्छे बाबा के मैं भाग जाऊँ, बाबा ने रमता योगी मस्त फकीर कह करके कहाँ आँख न डूबी, नहीं जा सकती है। भले खटिया भी न हो, कुटिया भी न हो,
और खाने के लिए कुछ न हो, मिल जाता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है मेरे को, मेरे पास जो है सो बाबा का ही समझो, पर आगे चल करके मुझे 2 हाथ तो है, वंडरफुल है बाबा के बच्चे, 2 हाथ तो है ना, मेरा फ्यूचर का ख्याल नहीं करो ना। ऐसा कौन से बच्चे होंगे, मेरे फ्यूचर का ख्याल नहीं करो, मैं कहाँ से चलूँगा। 2 हाथ तो है, अगर खा सकता हूँ तो काम भी कर सकता, काम करके खा सकता हूँ मैं। और जिन्होंने सेवा की है ना बहुत अच्छी तरह से, उसको खाना कहाँ से खाएंगे उसको कभी याद नहीं आता, दवाई कहाँ से मिलेगी कभी ख्याल नहीं आता है। वो कहेंगे सेवा मुझे लेना नहीं है, असुर नहीं लेना है, असुर नहीं, उनके पीछे पड़ते हैं सेवा करने के लिए। वो कहें मुझे नहीं लेना है ना, संगम युग में दद्दी ऋषि मिसल बनना है ना, मुझे हड्डी सेवा करनी है ना, हड्डियों से सेवा करनी है। तो जिन्होंने हड्डियों की सेवा की है ना, हड्डियाँ मजबूत है, हड्डियाँ कोई वो नहीं हो गई है ऐसे लंगड़ी लूली। भाई सेवा बहुत की है ना इसलिए कमर नहीं चलती, सेवा बहुत की है ना इसलिए बाँह नहीं चलती है। अरे कोई नहीं कह सकता ऐसे, इसलिए नींद नहीं आती है, सेवा बहुत थका और नींद नहीं आती है। थोड़ा कमरा ठीक नहीं है ना, मेरा ये नहीं है ना, अरे बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे याद में रहो, मैं तुम इतना अच्छी नींद आएगी। याद में रहने वाले को नींद ऐसी नहीं चाहिए जो सोए तो उठाना पड़े, उसको जगाना पड़े ना। ना न सोने में तकलीफ न जागने में तकलीफ। इतना ऐसा योगी बनना है, आज की मूली तो अंदर लग गई होंगी आपको, योगी बनना है ऐसा, सो जाए तो ऐसे बाबा का देखे कैसी बच्ची सोई पड़ी है। बाबा देखता था चक्कर लगा के बच्ची कैसे सोई है। दिन भर जैसी स्थिति होती है ना, जैसे संकल्प होते हैं ना, जैसे व्यवहार होता है ना, वही सोना भी ऐसे ही होता है। मेरा तो ये अनुभव है। क्यों दिन भर में क्या करने का है, क्या करते हैं, याद में रहना है, याद दिलाना है। कर्म भी वही कर रहे हैं, याद हमारी ऐसी रहे जो बाबा का ना, साधन भले है प्रयोग करो पर योगी बन के करो। यहाँ किसी बात के भी अधीन होना, माना, अधिकारी नहीं बन सकेंगे। अधीनता अधिकारी बनने नहीं देंगी। प्रकृति के भी अधीन नहीं बनना है, उसको अधीन अपने क्या बाबा ने बोला जब वरदान में, इतनी हमारी मनसा ऐसी पावरफुल हो, कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल है, कैसी भी तमोगुणी वो बिल्कुल बदल जाए, वो बदल जाए, लेकिन उसका हम सेफ रहे। खून नाय का खेल चल रहा है तो उसमें हम सेफ रहे। और फिर क्या करें, उस टाइम सहयोग देवे। वो कैसे होगा, साइलेंस पावर। बाबा का संदेश सुना है मैंने सुबह को। अच्छा, तो कल सवेरे आप मेरे को देना, मैं सुनाएंगी।
दोनों जगह सुनाएंगे। बाबा के है इंटरनेट द्वारा सारे विश्व में, पता नहीं, मुझे पता नहीं, इंटरनेट पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या क्या समाचार के, भाई इंटरनेट से देख लो, तो साइलेंस से देख लो, साइलेंस पावर। तो अभी हमारे सब इस बारी बाबा के मिलने की आकर्षण में सब महावीर, महारथी और महावीर में फर्क है। मैं ये नहीं कहती हूँ ब्रैन यहाँ कल से यहाँ बैठना, समझा जयंती। महावीर महारथी बाबा ने कहा है, ध्यान रखो मैं महारथी हूँ, अशरीरी बनने की आदती हूँ। घोड़े सवार की बुद्धि थोड़ी जंप लगाती है, महारथी की बुद्धि जंप नहीं लगाती है। हाथी इतना अच्छा है, सियाना है, उस पर बैठो ना बड़ा मजा आता है। ऋषि मुनि तपस्वी हाँ हाथी पर बैठते हैं। जैसे मैंने बताया था, हम घोड़े पर कभी नहीं चढ़ी, पर हाथी पर बैठी हूँ कई बार। जो थाईलैंड वाले ने भी हाथी पर बिठाया, जयंती आप थी, थाईलैंड वालों ने हाथी पर बिठाया। हाँ अच्छी फर्स्ट टाइम सारे सेवा जहाँ भी की होगी, किसने ऐसा नहीं किया है जो थाईलैंड वालों ने परिक्रमा करके हाथी पर बैठा, नशा चढ़ गया था। हाथी पर बैठने में बड़ा मजा, ऐसे पालकी पर ऐसे बैठे हैं, लगता है मैं तो राजऋषि हूँ। तो महारथी कौन है? शान है, मैं महारथी हूँ। घोड़े पर बैठने में लगाम पकड़ो, पता नहीं मुझे क्या करेगा, डर लगता है। लगाम पकड़ने का अक्ल चाहिए। हमको क्या करने का, महारथी, फिर बनेंगे महावीर। महारथी बन गया। बाबा ने एक ही बारी कहा तो महारथी हो, याद है। मना जैसा कर मैं करेंगे, मुझे देख और करेंगे। घोड़े सार को ये ख्याल नहीं आएगा। महारथी को जैसा हम सोचेंगे वो वाइब्रेशन जाएगा, जैसा मैं बोलेंगी वैसे सुनेंगी। याद नहीं भी बैठे, मैं ऐसे बैठी रहूँगी, महारथी नहीं बैठ सकता है, अलर्ट बैठेगा। कहीं बैठे ना, महारथी नहीं है। बैठक भी जो है ना, हाँ हिस्ट्री हॉल में हमारे गेस्ट ने देखा, इतनी जो हिस्ट्री हॉल का प्रवाह है। हम तो अभी तक ऐसे नहीं बैठते हैं, हम तो कुर्सी पर, बाबा तो संदली पर सीधा बैठा हुआ है। तो किसी को एम है मुझे ऐसा अभ्यास करना है बाबा की तरह से, 1 घंटा, आधा घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा प्रैक्टिस अंदर गुप्त करे, बस ऐसे महारथी हूँ। सिकन बुद्धि इधर से उधर चली जाए, तो महारथी घोड़े सवार प्यादा, प्यादा बेचारा छोटा, अपसेट होना, अपसेट करना। असंतुष्ट रहना, थोड़ा भी असंतुष्ट रहा ना, तो अभी हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, छोटे नहीं हैं, सारी विश्व है, हम लोग को देख रही है, पता चलता जा रहा है ब्रह्मा कुमारियाँ क्या है, क्या कर रही है,
क्या शिक्षा मिली है, कितनी पढ़ाई मिली है, कितनी पालना मिली है। चलना है तो कैसे, सोना है तो कैसे, उठना है तो कैसे। कल मैंने देखा कोई हमारे गेस्ट दिनचर्या पढ़ रहे थे, गुणों भी पढ़ रहे थे पांडव भवन में। एक तो गुणों की लिस्ट है, दूसरे दिनचर्या लिखी पड़ी है। ध्यान है ना, गुणों की लिस्ट वो सब मेरे में है। दिनचर्या अनुसार एक्यूरेसी है। तो एक स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, कुछ भी है, एक प्रेजेंट मार्क, कभी एब्सेंट मार्क ना हो। कोई एक मूली कभी मिस न की हुई हो, मार थी मूली मिस करे, बाबा कहेंगे ये क्या, कभी मूली मिस नहीं की होंगे। बाबा मिलता ही नहीं था हमारे से मूली। बॉम्बे में जाऊं, मूली पहले सुनी, यहाँ ट्रैवलिंग पर थी, मूली पर के आई हो, 2-3 दिन की मूली पर के मिस की होंगी ना, पर के फिर बाबा से मिलेंगी। अभी आज से याद रखो, मैं महारथी हूँ, या घोड़े सवार हूँ, या प्यादा हूँ। हाँ। हमारे दिलवाला मंदिर में भी दिखाते हैं महारथी और घोड़े सवार, यादगार है। जरा सा भी अवस्था हिली, हलचल में आई, या मेरे कारण कोई हलचल में आया, मेरे कारण किसका चिंतन फालतू चला, कौन हुआ वो। साइलेंस माना अपन को देखना, चेक करना। चेक भी इतना ऐसा करें जो पता भी नहीं चले जी कैसे चेक किया, कैसे चेंज हुआ, कहाँ किसी की नज़र में भी नहीं आया था, पर चेंज ऐसे हुआ। सियाना है ना, महारथी है ना, इशारे को समझ गया, वाइब्रेशन आ गया। उसको बाबा से टचिंग आ गई, तुम नहीं कर सकते हो। जैसे बाबा रोक लेता है हमारे पाँव को, मुख को रोक लेता है, तुम नहीं बोल सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। कोई भी कारण बाबा को नहीं बताया होगा, भले सांस या घुटने पर आ जाए, तुम नहीं कर सकती हो, और मैं नहीं कर सकती। क्यों सुना रही हूँ, बाबा आ रहा है, बाकी थोड़े दिन है। हम स्थिति ऐसी बना लेवें, एक बारी हम कितने दिन हमको नींद नहीं आई होंगी, कितने दिन मुझे पता भी नहीं है कितने दिन। हमारा भाव विश्व किशोर था, बाजू वाले रूम में सोता था, मैं जाकर मैनेजर क्वार्टर में रही थी, तो मेरी खांसी और एस्थमा का कारण किसको डिस्टर्ब ना होए, तो मैनेजर क्वार्टर कोने में था, अकेली रहती थी। मम्मा कहती थी, दादी और बाबा कहता था, बच्ची कोई सोए, मैं बाबा नहीं, किसको तकलीफ नहीं देंगी, अगर पानी पी सकती हूँ तो पानी हीटर पर गर्म भी कर सकती हूँ, मैं किसको तकलीफ नहीं देंगी। विश्वकेश्वर भाई बाबा के पास पाया, बाबा मैं देखता हूँ सारी रात नींद नहीं करती है, एक इंजेक्शन लगा दूँ चाहे नींद तो करे ना। तो बाबा ने कहा, बच्ची को तुम नहीं कह सकता है इंजेक्शन। बाबा अपने रूम से ऐसा इंजेक्शन लगाए, मैं सो गई। विश्वकेश्वर भाई बाबा को कह रहा है, मुझे पीछे पता चला है, कहा इसको तुम नहीं कहो। फिर मम्मा को भेजा मेरे पास,
बच्ची को तुम नींद करा के आओ। मैं क्यों सुनाती हूँ, इतना सुख है भगवान का बनने में। मम्मा आई, इतने दिन मम्मा भी मेरे पास नहीं आई थी अच्छी तरह से, दृष्टि दिया, संदेशी को भेजा, उसके लिए एक गर्म जल बनवाया, जो अभी जल पीते हो ना, कैंसर, इलायची, मिश्री, मां जल पिला के सुला के गए। सो 4 बजे बाबा आया। आज मैंने लाल किला देखा ना, मेरे अच्छा लगा। लाल किले पर मक्खन डाल लगा के खिलाया, थोड़ा सा पीस पर खिला के फिर कहा सो जा रहा। फिर कहा आज बाबा के साथ, बाबा तेरे साथ खाना खाएगा। दिन में बाबा ने आकर मैनेजर क्वार्टर में हमारे संग खाना खाया। उसके बाद बाबा हमेशा खाना साथ में खिलाता था। इस सुनाने का मतलब ये, इतना सुख मिलने का, हाँ, कितना भाग्य है। बाबा कहते औरों को क्यों देखते हो, अपने भाग्य को देखो। भाग्य विधाता, हाँ, मेरा बाबा है, भाग्यवान हूँ, भाग्यवान हूँ, भाग्यवान हूँ। ऐसा सिमरन करते 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 हमारे स्मरण से और भी कहेंगे मैं भाग्यवान हूँ, भाग्यवान हूँ, भाग्यवान हूँ। ये शिवा जो संग में आए कहे मैं भाग्यवान हूँ। हम भाग्यवान है, कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं करते। कहते तो असोचता और अकर्ता, डोंट थिंक। असोचता, करते हुए कर्तापन के भान से परे हो जा। अकर्ता, जरा सा अभिमान है, सोच है, तो बाबा वो भाग्य नहीं है। बाबा करा रहा है, ड्रामा में नूंधा हुआ है, मैं भाग्यवान हूँ। जब बाबा ने निमित्त बनाया है, भाग्यवान हूँ। जैसे महावीर, पर वो है महावीर, हाँ, प्रैक्टिकल महावीर की कहानी है ना। धक लगाया राम हनुमान को, दर्द हुआ राम को। हमारे से ऐसे ही होता था। बाबा की शक्ल पीली, दीदी पूछे क्या जन्नत का दर्द पी रहा हूँ। गद्दी पर बैठे कर मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये आज इसलिए सुना रही हूँ, हर एक समझे मैं महावीर हूँ। पहले महारथी समझो, फिर महावीर, जो रावण को चैलेंज करने वाला। खबरदार मेरे पर तो गया पर तुम्हारा राज खत्म कर दूंगा, देखना। हमारे पास ही माया चींटी के रूप में या मकोड़े के रूप में या आती रहेंगी, नहीं आ सकती। तो इतना ही सिर्फ भगवानो वाच्य, तो मेरा महारथी बच्चे हो ना। कौन कह रहा है? तुम मेरे युद्ध के मैदान में, रूहानी सेना में हो ना, सेना में हो ना। अभी एक तो बच्चे है वो, दूसरा रूहानी सेना में हो, विश्व के सेवा के लिए हो, सत्युग की दुनिया लाने के लिए, दुख शांति को भगाने के लिए, सुख शांति में संपन्न बनने के लिए हो। तो इसमें इंडिविजुअली हर एक को अधिकार है ऐसा बनने का।
बाबा हमेशा कहता है बच्चे ड्रामा अनुसार अभी भी भाई ये कोई यही बने हैं ना, अरे कोई भी आज का आया हुआ अभी तीर लग जाए ना, समझ में आ जाए ना सब, वो होगा साइलेंस से। आवाज़ में कमाना बंदा, आवाज़ बंद ज़रूरत ही नहीं है और सोच की ज़रूरत नहीं है। दिल से बाबा को याद करते हैं ना, तो जो राइट बात होने वाली है वही होंगी, टाइम पर होंगी, एक्यूरेट होंगी। तो आज से लेकर कम से कम क्लास में टाइम पर आना, सब कुछ एक्यूरेट करना, अमृत वेला एक्यूरेट करना, हर एक समझे में मारती हूँ। अलबेलाई में हाँ, यहाँ मैं कल परसों कहा था, रिपीट करती हूँ, बैर वालों की माया और है, बाबा के बच्चों की माया और है। बैर वाले तो बेचारे रहते ही उस दुनिया में है, उनको वहाँ से अपन को छुड़ा के ईश्वर का बन करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ना भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे बन गए हैं उन कोई कार्य में लिप्त हो सकते हैं। कार्य भले करो, लिप्त नहीं होना है मेरे को। जैसे बाबा निर्लेप न्यारा, इतना करता है पर निर्लेप न्यारा, उसका कोई भी हार जीत मान अपमान की फीलिंग से न्यारा कुछ। कार्य में लिप्त होना माना याद में टाइम नहीं है, फिर कार्य ने खींच लिया, दिमाग में कार्य घूमता है, याद में रहो तो कार्य हुआ ही पड़ा है। ये एक विधि जो है ना, किसके दूसरा है, किसी के भाव स्वभाव के, किसी का अच्छा प्रभाव, किसके लिए घृणा। जरा सा भी इतना है ना, बाबा कहता है योगी मेरा बच्चा नहीं है। किसके भी स्वभाव का असर हमारे ऊपर हुआ, अच्छे का, भाई अच्छा है मेरे को बड़ी मदद दी है, वो भी फेल किया है तो अपना भाग्य बनाया है, मेरे को मदद दी है। सूक्ष्मति अपनी बुद्धि को बड़ा स्वच्छ और याद सच्ची किसको कहा जाता है, उसमें अंदर से फिर भी आती हूँ साइलेंस। बड़ा अच्छा, जो सफलता पानी हो स्वयं के पुरुषार्थ में, सेवा की हमको फिक्र नहीं है, असुर फिक्र नहीं है, वही परा है, वही परा है। मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, सैकड़ों हजारों बाबा के बच्चे कर रहे हैं साथ, एक नहीं कर रही हूँ। सबके संयोग से सफलता होती है। मैंने क्या किया, पुरुषार्थ में ऐसा एक एक घड़ी, एक एक मिनट सफल होता रहे, शान है। व्यर्थ भूल से भगवान की मेहरबानी हो, व्यर्थ ना आए, भगवान की मेहरबानी। मेहरबानी भगवान की तब है जब बाबा ने सब कुछ सुनाया, हिसाब किताब बनाया और तुमने चुकतू करूं मैं? बनाया क्यों हिसाब किताब? इतनी समझ दी है, तुम कोई पुराने कर्म बंधन हिसाब किताब तोड़, अभी कोई भी हिसाब किताब कुछ हो ना, चुकतू कर, बनाओ तो नहीं।
कहाँ भी किसके हिसाब किताब बनाया तो वो बंधन करा। तो इस बारी अभी हम सब माया जीत तो वही परे है, पर प्रकृति भी जो दुनिया बिचारी को इतना दुख शांति में, उसको थोड़ा ठंडा करे। हमको कोई तकलीफ नहीं दे सकती। पर अभी तो टाइम देख रही हूँ जयंती, जो प्रकृति की बातें हमारी, अब तुम बताना है नो कभी अच्छी तरह से कितने प्रकार से प्रकृति को हमको कैसे अपने आर्डर में रखना है, तब तो राज्य कर सकेंगे सतयुग में। वो राज्य करने का संस्कार अभी पड़ेगा ना। हमारे राज्य में सब सुखी होंगे, पर वो संस्कार अभी दिखाई पड़े। भले सतयुग त्रेता में ना आवे, भले अपने टाइम पर आवे, पर सुख देने वाले, दुख को खत्म करने वाले ये लोग हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, जिन्होंने दुनिया से दुख शांति को भगा दिया। प्रकृति पर जीत पाना, प्रकृति को चेंज करना। खबरदार जो तुम प्रधानता अभी सीधी हो जाए तुम। इतना महावीर का पाठ है। दिवाली आ रही है ना, दशहरा हो गया, दिवाली आ रही है। तो प्रैक्टिकल हमारे त्योहार है ना, ऐसे टाइम पर आए। अच्छा भाई, सबको टोली खिलाएंगे, है ना? खिलाओ ना। ओम शांति। ओके। अभी सब Now, साइलेंस में everyone is to sit in a complete stage of silence. कानों द्वारा सुनना है, You are to listen through your ears, और हमको मुख द्वारा बोलना है। and I will be speaking through the mouth, but all of us will remain in silence. ये जो हमारा 30 साल हो गया अभी, This is now my 30th year हर संडे के पापा ने नियम बना के दिया था। of practicing this discipline of an hour's meditation for serving the world. And I remember the day तो भाई हमारा हाजिर नहीं है, जिसने बाबा से there was a brother who took this inspiration as to what we should do for the service of the world. मधुबन से मीठे बाबा के प्रेरणा अनुसार, And according to the inspiration of Sweet Baba from Madhuban, ये जो नियम बना के बाबा ने दिया है, Baba has given us this discipline. I'm not asking you to raise your hands, but I believe that many, ये जिन्होंने कभी मिस नहीं किया होगा। there may be just a few who have never missed this discipline. मैं अपने दिल से कहेंगी, But I will tell you from the depth of my heart, do not miss this again. Do not miss this for any reason, क्योंकि विश्व सेवा because something which is dedicated to the service of the world, where we sit
in a gathering for this. 11-12 साल हो गया I think there's been about 10 or 11 years जो एक ही टाइम that altogether, 6:30 from 6:30 to 7:30 throughout the entire world, we all sit for an hour's meditation for world service. मेडिटेशन चलता है And meditation is going on in all places. कितनी अच्छी सेवा It is such good service संगठन में बैठ विश्व को for us to sit together in a gathering and sit in meditation through which the world automatically receives peace. Even when we were in Karachi and living in Brij Koti, Baba said that when you sit in silence, there are many people who will have visions ये संगठन का of this gathering. कॉमन बात सहज बात नहीं है This is not a small thing or an easy thing. प्रेयर में आवाज है In prayer, there is the sound of the voice. ये आवाज से परे But what we are doing is beyond the sound of the voice. एकाग्रता की शक्ति से All of us in the power of concentration मीठे बाबा के सर्वशक्तिमान बाबा के and sweet and powerful Babas, in sweet and powerful Baba's remembrance. बात की हलचल नहीं There is nothing that creates fluctuation. No one's intellect shakes. अब अंदाजा लगाओ You can analyze this. कहाँ एकदम जोर से बरसात पड़ती है Suppose it is raining very strongly, इतना or there is a very hot atmosphere, से बरसात बरसाई and you see how the rain comes down. बड़ा कहीं अंदर जगह And there are many people मंडल व who feel this vibration is like the cool rain falling on their head. बरसात Rain पर पड़ती है goes to so many places. ये अनुभव कईयों के अभी And even now, many have this experience. जिन इस प्रकार की इतनी एकाग्रता की शक्ति से But now, by this kind of power of concentration which Baba has याद में बिठाता था asked us to sit in remembrance for this, शुरू हो गई हिलना शुरू हो once the song started, people started getting up and looking around. गई। जैसे ठहरे हुए थे गीत पूरा आज बजे तो अब उठे And you had the feeling that you were sitting and waiting for the song to play and then you can get up. But when we used to sit in front of Baba, कितना टाइम बैठे we sat for so long time. जी कहता है बाबा आपके संग Our life says, Baba, I want to be in your company, and in such a big कितना याद में gathering. Of course, sitting alone, we cannot stay in so much remembrance as we can in the gathering, because we get a lot of help from the gathering and also from the place, वायुमंडल बना हुआ है ना because this atmosphere has been created over a long period. इस हाल में आएंगे क्यों आएंगे Why does anybody come into this hall? या मुरली सुनने Either to listen to the Murli, to listen to a class, or साइलेंस to sit in silence. मैं भी आजकल मेडिटेशन कम यूज करेंगी And now I don't use the word meditation much these days, तो उसका अर्थ समझाना पड़ता है because then you have to explain what it means. प्रकार से मेडिटेशन करते हैं Because there are many different kinds of meditation. But now we say, let us sit in silence. साइलेंस में रहना मानना ही है To remain in silence means रहेंगे अंतर्मुखी जो होंगे ना वो साइलेंस you must remain in an introverted stage, नाम मात्र निमित्त मात्र आएंगे and you would only come into sound instrumentally, but much is accomplished through remaining in silence. प्रेरणा है ना The inspirations that come from Baba सेवादारी बना रहा है as to how we should become servers at this time. बहुत सालों से सेवाएं कभी We have been doing service and played a good part doing this for many years, but now the murlis that we are hearing
are talking about the love of the heart and the love of and the understanding of the head. And I spoke with Dadi Gulzar about this, how Baba speaks to us so that we understand something. We understand through the intellect who we are and who Baba is. But if we can understand through the heart, who am I and who is my Baba, then there is no need to make any effort for those who understand with the heart. Whatever you have attained from Baba and what you are attaining, what you have attained and what you are attaining. You don't get so much from children. It is the father who gives love to the child. These are new children of Baba, and he will give them a lot of love. And if anybody has not loved that child, then Baba will love that child more than anyone. To remember Baba is good, but to receive and take the love from the father is a great wonder. It is amazing, his love. We have remembrance and immediately we receive the wave of love and automatically we are established in remembrance. It's not that we have to set ourselves in remembrance, but we experience love and so the feeling of remembrance comes. Does anybody have this experience that you feel love and then automatically nobody else seems to be having this feeling that you feel Baba's love? Do you have this leakage going on, which Baba spoke about? Do you cross the line of Maryada even with a thumb or finger? When you see the golden deer, is there a little bit of attraction? You go towards facilities, but do not do that. There are some very good children of Baba. Baba has called them the yogis who go all around and who are the intoxicated beggars. Their eyes cannot fall into any things or people. They do not get caught up. Even if they don't have a place to be or a bed to sleep on, or if there's nothing to eat, you will get something. Someone wrote to me in a very nice way, said, whatever is mine is Baba's, but then in the future I at least have my two hands. Is a wonderful child of Baba. I still have two hands, so don't worry about my future. How many children of that, like that, will there be who say, "Don't worry about my future. Where will I get my source from? I have my two hands. If I can eat, then I can do some work, and if I can work, then I will be all right." And those who have served very well, they never worry about whether they'll get food or medicine. It comes to them somehow or the other. They say, well, I don't want to take service. I don't want to take anything. And they find that people want to serve them, but they say, no, I don't want to take service. You have to become like the example of Dadi Rishi and do very, very deep service from the depth of your bones. And those who have done service from their bones, they have very strong bones. They're not like that crippled. Some people say, oh, I've done a lot of service and this is why I have a bad back or bad arms. Nobody can say this. Sometimes people say, this is why I can't get sleep. I'm very tired, but I can't get sleep. Perhaps the room isn't acceptable, or this thing or that thing is missing. Baba says, child, you just stay in my remembrance, and I will give you such good arrangements. Just those who stay in Baba's remembrance don't need that kind of sleep where somebody has to wake them up.
No, you shouldn't have to be woken up. Neither is there difficulty going to sleep nor difficulty waking up. You have to become such a yogi, and you got the feeling that you have Baba to make you go to sleep. Baba goes and sees how all of his children are sleeping, how my child is sleeping. And as the day passes, the stages that you are in reflects the thoughts that you are having and the interaction that you are doing, and it's according to that that your sleep is such. This is my experience. Because what do you have to do throughout the day? What are you doing all day? You have to remain in remembrance and remind others. You have to do that karma which does that. We should be in such remembrance so that whether there are instruments or not, but we must remain yogi in the midst of that work and interaction. There shouldn't be any issue which would make you dependent, because if you become dependent, it means that you cannot be the one who claims your rights. Because dependence prevents you from claiming any rights. You must not be dependent on the elements of matter either. What did Baba say? As a blessing, your mind should be so powerful that no matter how bad the vibrations are or the person is, they change because of your power of the mind, and you remain safe from their negativity. Even if there is the murder of the innocents going on, you remain safe from that. And what do you have to do at that time? Give cooperation to them. And how will that be? It'll be through the power of silence. You heard Baba's message. So give it to me tomorrow, and I will read it to all of you, and both places will hear the message. Internet goes to all places, and people, if you want to see anything, see it through internet. But now I am saying, if you want to see anything, see it through silence, the power of silence. This time, in the attraction of meeting Baba, all other great warriors, the Mahavirs and the Maharatis, there's a difference between those two. Now Brian must come and sit in the front, right in front of Dadi, because the Mahavirs, the great warriors, and the elephant riders, it would be said, be careful, I am a Maharati, I live in a bodiless state. The mind of the cavalry jumps around, but the mind of the elephant riders remains stable. The elephant is very steady, very wise. If you sit on the elephant and ride on the elephant, you will enjoy it very much. The rishis, munis, and tapasvis, they used to sit on elephants. And so I haven't ridden on a horse, but I've enjoyed riding on elephants, especially in Thailand. So in Thailand I went riding on elephants. And so nobody else had done what the Thailand people had done, and I was in an intoxicated state riding on those elephants. To sit on an elephant, you feel good. There's the feeling of being something. I'm a Raj Rishi sitting on this elephant. And so what is a Maharati? There is the dignity of being a Maharati, the elephant rider.
If you sit on a horse, you don't know what you'll have to do. It makes you afraid. You don't know whether he's going to buck or kick or what, because you need to know how to hold the reins and control the horse. So what do I have to do? I have to be a Maharati, and then I can become the great, brave warrior. Once Baba had said, "You are a Maharati to me. Remember this." It means whatever action I do, others will see me and do the same. Those who are the cavalry, they don't think this way. The Maharati understands that the vibration will go according to what they think, and whatever they speak, it will have an impact. And so when you're sitting in remembrance, you won't sit in a casual way, you will be alert. Some people sit in a very casual way. They are clearly not Maharatis. The position of your seat. You see, in the history hall, our guests came and they experienced the influence of the history hall, and we told them how Baba would sit on the stool straight with his half lotus pose. Does anybody have the aim of sitting the same way Baba was sitting for an hour, for half an hour, for 8 or 10 hours? Do inner work and sit straight and stable. That is a Maharati. If the intellect wanders off in a second, then that's not stability. So there are 3, the Maharatis, the cavalry, and the infantry. And the infantry are people who get upset easily and they upset other people. They are pretty much dissatisfied. If you are slightly dissatisfied, but now we have to think of ourselves as university students. We're not young. The whole world is looking at us. Now everybody knows what Brahma Kumaris are and what they're doing and what the study is. There is so much study and sustenance that everyone is receiving. If you want to know how to move around, then this is how you know how to sleep, you know how to wake up. And I saw among our guests, they were reading other virtues, they were reading the schedule, because there are 2 lists. One is the list of 36 virtues and the other is the schedule. And so there is the attention on the list of virtues to see that all of these are in me, and am I acting accurately according to the schedule of the day. So whether you call this a school, a college, or a university, it's one thing. There must be the present mark. Let there not be any absent mark. Let there not be any murli that you miss. A Maharati never misses the murli. And I never have missed any murlis. Baba would not meet us, and I had to go to Bombay, or he said, "Did you read the Murli and then come?" I read the Murlis of 3 days, and then I met Baba, but I wouldn't meet Baba without having read the Murli first, which had been missing while I was traveling. And so ask yourself, am I a Maharati, a cavalry, or an infantry? You can see these statues in the temple of Dilwara, the people who ride elephants and those who ride horses, and then the infantry. There shouldn't be any fluctuation in the stage, in your stage, nor should you be instrument for any disturbance in anybody else's stage. I should not be responsible for disturbing anyone's thoughts or minds. Silence means to look at the self.
and to check. And you have to check in such a way that nobody knows how you checked and then changed yourself. No one's eye, you see that, yes, this person was like that, but now they're something else. They're very intelligent. They are a Maharati. They've picked up the signal and the vibration reached them and they did what was necessary. They received the touching from Baba. That, no, you can't do like that. It is as if Baba holds our mouth and says, no, you can't speak like that, or holds our feet, you can't take such a step, you cannot do such a thing. And there couldn't be anything that you would not have spoken to Baba about. You cannot do something. No, I can't do anything against the principles. Why am I telling you these? Because Baba's coming in just a few days, and we need to make our stage such. Once, for many days, I didn't get sleep. I don't know how many days. The senior brother Bishwa Kishore was there, and he was in the next room. I had a problem with coughing and asthma, so I slept separately so that I didn't disturb anyone. So I was in the corner alone in the manager's quarter, and Mama used to say, and Baba used to say, I said, should anybody sleep with you? I said, no. So if I can drink some warm water, but I'm not going to give anybody any trouble. And Vishwakishore had reached Baba, and he told Baba that she's not sleeping the whole day. Should we give her an injection for sleeping the whole night, rather? And Baba said, you cannot say this. But Baba from his room had given me such an injection of spiritual vibrations that I did go to sleep. Vishwakishore Bhai told this to Baba, and I came to know about it later, but he said, don't tell her. And then he sent Mama to me. And he told her, get this daughter to go to sleep and then come. Why I'm telling you this, there's so much happiness of becoming Baba's. Mama came to me, and she hadn't come to me for many days. But she came in a very beautiful way, and she stood, she sent the message, and at that moment they made a special a drink with saffron and sugar and cardamom, and I drank that and went to sleep. Then at 4 a.m. Baba came. And he brought the red bananas, and he put butter on it and gave me that to eat. And then he said, now you go to sleep. And then I said, no, I will eat with you, Baba. And in the day, I came in the manager's quarter and I ate. And then Baba always used to get me to eat with him. I'm telling you this so that you know how much I have received from Baba, how much happiness, how much fortune. Baba says, why are you looking at other people? Look at your own fortune. He is the bestower of fortune. He is my Baba. I am the fortunate one. I am fortunate. I am fortunate. And if you think about this deeply, through this thinking, and you feel, others will also feel, I'm fortunate, and this is service. Those who come into your company, they also feel, yes, I am fortunate, I don't do anything, I'm just fortunate. I don't do anything. He says,
he doesn't think and he doesn't do anything. Don't think. So do not think. असोचता. Be free from thought. करते हुए कर्तापन के भान से परे हो जा. And whilst doing something, be free from the consciousness of doing, so that there isn't any arrogance. तो बाबा वो भाग्य नहीं है. Because then there isn't that sense of fortune. बाबा करा रहा है. ड्रामा में नहीं था. Baba is getting it done. It is fixed in drama. I am fortunate. And Baba has made me the instrument. I am fortunate. And so this is the great warrior, the great brave warrior, the Mahavir. प्रैक्टिकल महावीर की कहानी है. This is the story of the great warrior. हनुमान को दर्द हुआ राम को. Hanuman got hit, but Ram felt the pain of it. And this used to happen. And he was saying, no, I am taking the pain of Janak. I was in the hospital. I'm telling you this so that everyone should understand I'm a Mahavir. First think I am a Maharati, the elephant rider, and then the Mahavir, the one who challenges Ravan. Be careful, I am going to destroy your kingdom, you will see. You say that to Ravan. Maya may come in the form of an ant or a spider. But it can't get to me. So these are the words of God. He says, you are my Maharati child. You are in the battlefield, in the spiritual army. And you are the great warrior, the brave. One hand you are the child, on the other hand you are in the army and you are on world service in order to bring about the golden aged world and destroy all forms of sorrow and distress and bring about a world of peace and happiness. So each one individually has the right to become this. Baba always used to say, child, according to drama, anyone can become this. Because the arrow can hit and the understanding can come. That comes through silence. A sound of the voice is not much necessary, and you don't need to think. From your heart, remember Baba, and then whatever is the right thing that has to happen, it will happen accurately at the right time. So from now, at least you must reach the class in time and have your Amrit Vela accurately in time. Each one should understand themselves to be a Maharati and not be careless. Day before yesterday I had said, and I am repeating also, the outside people's Maya is different, and the Maya that comes to Baba's children is something else. They live in the Mayavi world, the outside people, and we freed them from that, and they come into this world and they think of moving forward. But those who have become Baba's children, they cannot be caught up in any activity, but you can't take a lift from your action. Baba does so much, but he remains free from the effect of it and detached from all of it. Be very independent from any feelings of insult or praise. Because if you get caught up in the activity, then there's no time for remembrance. The activity that you're involved in runs around in your head, and you have to understand that what you're doing is
fixed. Its accomplishment is fixed. It is an instrument. You mustn't get under anybody's influence of their behavior or their nature. Some people you get impressed with, some people you dislike. If there's even a little bit of that, then Baba says, then you're not a yogi child of Baba. If you get influenced by someone's nature, whether it's good, if you say, yeah, this person helped me a lot, then that also means that you are a failed. Somebody did something, they made their fortune. It's not that they helped me. No. It's a very subtle thing. You have to keep your intellect very clean. And there has to be true remembrance in which internally you come into silence. It has to be so good. Whatever success you have to achieve is through your personal effort. You don't have to be concerned about service. Not at all. It's already fixed. It is destined. I cannot do these things alone. There are thousands of Baba's children who are with me, and we are all doing this together. Success comes when we have the cooperation of everybody. It's not that I did anything. Effort has to be such that each and every moment, each minute, there is success. This is your dignity. Let there not be any waste. This is the blessing of God, that there is no waste in my life. Baba said, you create the karmic account and then you expect me to finish it for you. Why did you create this karmic account? I have given you so much understanding that you have to finish your old karmic accounts and do not create new ones. Doesn't make any sense. If you have created a karmic account with anyone in this confluence age, it is a very strong bondage. And so this time, all of us have to become the conquerors over Maya, which is fixed anyway, but we also have to be the ones who make the elements of matter cool down. They are troubling everyone in the world now, but they can't trouble us. Now I am seeing the time, and so there are many points about matter that need to be shared with you. There are so many kinds of ways in which matter remains in order through our silence. Then only we will be able to rule in the golden age. We have to develop the sanskaras of being rulers at this time. In our kingdom, everyone will be happy in the golden age, but those sanskaras have to be developed here and now. Even if I don't come in the golden age or silver age, you come according to your own time, but the one who gives happiness and finishes sorrow are the children of the Supreme Being. And those who have destroyed sorrow and unhappiness and peacelessness from the world. You have to have conquest over the elements of matter and change it, make them function in a proper way as masters of matter. You have to play this role of the Mahavir. Now Diwali is coming, Dashera is past. And so we have to be practically ready and be there at time. Okay, now I'm going to give